ये दोनों आपस में बहुत सारी चीजें कुछ करते रहते हैं, पर इनको बोलो अब कि बच्चा तो पैदा कर ही लें, क्योंकि फिर बोर हो जाएंगे ना एक वन पॉइंट ऑफ टाइम अपने आप से। बुढ़ापे में गिर जाओगे तो उठाएगा कौन? हाँ, बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? Who will take your responsibility? हाँ, तीसरा तुम जो इतनी प्रॉपर्टी बनाओगे वो किसके नाम करके जाओगे? मुझे कोई बोलता था कि बच्चा पैदा करना चाहिए और कोई बोलता है बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए। पर नॉनदलेस yes. वो दोनों बोलने वाले लोगों के पास खुद के बच्चे होते हैं। Yo guys, what's up? Welcome to another episode of Happily Whatever After. दोस्तों, क्या आपको पता है जिस दिन हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी तभी भी शोकी ने इंडियन ड्रेस पहनी थी और मैंने गाना बजाया था। वो अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह का गाना आया था। क्या घंटी कौन सा गाना था? I'm sorry, I'm not able to गाना नहीं याद है, बट तूने मारी एंट्री दिल में बजी घंटी टांग टांग टांग। वैसे ही शोकी आज बहुत सेक्सी लग रही है। शोकी, थैंक यू सो मच। Thank you for noticing, Karan. Thank you. You know, there is sexy way of looking when she wears sari. Thank you so much, my love, for wearing a sari and special episode. And here goes the episode. To शोकी। Yes, शोकी। तो आज आपका क्या बहाना है एपिसोड करने का? आज बहाना कहाँ से आ गया? अरे लोगों को तो बहाना चाहिए होता है ना बच्चा करने का। नहीं, लोगों को बहाना चाहिए होता है ये क्वेश्चन पूछने का कि बच्चा पैदा कब करें। अरे हाँ, मतलब मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था। भावनाओं को समझो दोस्तों, भावनाओं को। हाँ। तो बेसिकली शादी के बाद से हमको हो गए हैं 7 साल। यस। और शायद हर साल में कम से कम 15-20 लोग पूछते हैं हमको कि और एक बार में नहीं मानते। हाँ। 2-3 बार पूछते हैं। अलग अलग टाइम पे पूछते हैं। जब मिल जाए तब पूछते हैं कि गुड न्यूज कब दे रहे हो? yes. बच्चा पैदा कब कर रहे हो? yes. हमको ऐसा भी बोला गया है कि ये दोनों आपस में बहुत सारी चीजें कुछ करते रहते हैं, पर इनको बोलो अब कि बच्चा तो पैदा कर ही लें, क्योंकि फिर बोर हो जाएंगे ना एक वन पॉइंट ऑफ टाइम अपने आप से। बुढ़ापा कैसे निकलेगा? और वन मोर कि बुढ़ापे में गिर जाओगे तो उठाएगा कौन? हाँ, बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? Who will take your responsibility? हाँ, तीसरा तुम जो इतनी प्रॉपर्टी बनाओगे वो किसके नाम करके जाओगे? और क्या सुनते करण अपन? हाँ, मतलब अगर तुम लोग बच्चा नहीं पैदा करोगे तो तुम लोग बुढ़ापे में एक दूसरे से बिछड़ जाओगे, बिकॉज बच्चा ही जो होता है वो साथ में रखता है एक दूसरे को। we have been laughing, but anyway, there are multiple reasons that people have for having kids and not having kids, but we have our own choice of not having kids. Yes. So we are going to discuss today because so many people keep asking us and so many of our audiences have asked us कि बच्चा कब पैदा कर रहे हो? Yes. मतलब क्यों? मतलब I have like this episode. Frankly, guys, it's our choice, it's your choice to have multiple babies. Do whatever you want to do in your life. This episode is just from the thought that we wanted to share, because we have been sharing our life journey. We have been sharing how we think, what we do, lot of things. So we thought that हम अपना एक thought process बता दें कि हम कैसे इस final decision पे आए कि हमें बच्चा नहीं चाहिए. Yes, and then obviously there are a lot of multiple choices that people make today. By adopting it, by living abroad, surrogacy and everything. That completely remains up to you. It's your personal choice, and this episode has nothing to do with influencing anyone. Yeah, and it does not mean that we are commenting on other people's choice of not having a kid or having a kid. I think we have a lot of respect for our friends who have chosen to have kids. I think it's a very bold decision in today's time, and hats off to all the parents out there, because you guys are the most I would say bahadur. Yes, like you guys are courageous to take the step of taking the whole responsibility of bringing a life into this world and then making that person into a responsible adult. So that's a huge responsibility. Huge respect for all the parents. Yes. Everyone who chooses to have a child. But similarly, we expect the same respect from others when we say that we don't want to have a child. Yeah. So Karan, let's start from the start.
हमने सपने तो बहुत सजाए थे शादी के पहले, है ना। हम दोनों ने बात करी थी, हमारे पास तो रिटर्न प्रूफ भी है, हमारे कितने सारे पुराने लेटर्स में लिखा हुआ था। बहुत ही चीज़ी था कि छोटा करण, छोटी हमारे वो क्या हमने हमारे एपिसोड में भी था जहाँ पे हमने अपने लव बाइबल और रिचुअल्स वाले लव बाइबल जो करण और मेरी लिखी हुई थी, उसमें लिखा था उसमें हमने बकेट लिस्ट पे 3rd नंबर पे ही लिखा हुआ था ऑलमोस्ट कि we will have kids when we have lots of money. Yes. और अब हमने बहुत ही दिमाग था तब हमारे पास था करण, हमने वो पेंसिल से लिखा था तो अब हमने वो मिटा दिया। So smart, we are yes, very smart. But yes, I think let's start this episode that कि मैं अपनी बात करूँगा पहले शुरुआत I would say that Karan, how did you, like I want you to walk us through a पर्सपेक्टिव ऑफ योर माइंड कि कैसे कैसे तुम्हारा दिल दिमाग बदला अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू इन लाइफ। सो आई थिंक मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा, इलैबोरेट नहीं करूंगा, बट हाँ मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मैंने जो अपना चाइल्डहुड देखा था, करेक्ट, उससे मुझे हमेशा लगा था कि यार नहीं, बच्चा करना चाहिए अपने को, करेक्ट। और बच्चा बुढ़ापे का सहारा रहते हैं, बच्चा ही सब कुछ होता है, करेक्ट। क्योंकि बचपन में जब आप लोगों को देखते हो जहाँ पे आप पले बड़े होते हो, करेक्ट, you know you are a sort of you are living in a society which is running like a herd mentality, करेक्ट, कि आप बड़े होगे, आप जॉब पे जाओगे, आप शादी करोगे, आप बच्चा करोगे, and you will be happily ever after. तो वो मेरा चाइल्डहुड रहा है, मैंने सबको उसी तरीके से देखा था। So my influence was that कि हाँ, this is how life is generally. But then as I started growing up, मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, पहले अपनी लाइफ बनानी चाहिए, ठीक है, फिर इन सब के बारे में सोचना चाहिए। पढ़ाई करो, अच्छा आदमी बनो, सब कुछ करो, देन यू विल डू इट, लाइक जनरली जो होता है। बट देन एज वी ग्रू यू नो, और मेरे फैमिली का भी काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस था। ऐसा नहीं था कि मेरे फैमिली का इन्फ्लुएंस नहीं था, बिकॉज मैंने अपने सिस्टर को देखा कि शी गॉट मैरिड एंड द फर्स्ट ईयर ओनली शी हैड अ बेबी, राइट। तो मेरे लिए वो एक थॉट प्रोसेस बन गया था कि शादी करने के बाद आप बच्चा पैदा करते हो और फिर वैसी जिंदगी जीते हो। आई हैव ऑल्सो सीन माई कजन्स जिनकी फर्स्ट ईयर में शादी हुई है, बच्चा पैदा हुआ है और तीसरे साल में डाइवोर्स हुआ है। सो आई वॉज लाइक कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तो बाद में समय बताएगा। बट आई हैड लाइक कि हाँ ठीक है, अगर मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको अच्छे से पालूंगा, मेरी बीवी होगी तो मैं सब कुछ करने की कोशिश करूंगा, आई विल गिव हर अ गुड लाइफ एंड यू नो एज वी डू इट। एज आई स्टार्टेड ग्रोइंग एंड स्टार्टेड अर्निंग मनी, आई थिंक we have discussed enough times that what were the issues that happened with us. तो मेरे लिए जो मेरे फैमिली का और जो मेरे मदर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, शी यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी दैट कि नो, बच्चा कर ले, मैं हूँ, मैं संभाल लूंगी। एंड आई हैड सीन माय नीज एंड नेफ्यू बोथ बीन टेकन केयर बाय माय मॉम, तो मुझे लगा था कि यार ये हो जाएगा। बट देन एज वी स्टार्टेड फेसिंग द इश्यूज इन आवर लाइफ अबाउट यू नो डाउरी, बहुत सारे इश्यूज हुए, हमारी शादी टूटी, बहुत सारे इश्यूज देखे हमने। देन आई वाज लाइक कि यार ठीक है, समय बता देगा क्या करना है। तभी भी मेरे मन में होता था कि चलो ठीक है, बच्चा करना सही होगा, जिंदगी ऐसी जाएगी। तो क्या जब हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे शादी के बाद, तो क्या तुम्हारे दिमाग में भी, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि सोसाइटी ड्रिवन थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे, तो क्या उस टाइम पे भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा आया था कि यार बच्चा पैदा कर लेते सब सही हो जाएगा? ये तो हर थोड़े दिन में जाने की नहीं, आई वोंट से दैट कि दैट वाज माय एवर क्वेश्चन, बिकॉज मैंने क्लियरली सोचा था कि यार मैं, क्योंकि जब मैंने अपनी सिस्टर को भी शादी करते हुए देखा और उसके बाद जो उसकी लाइफस्टाइल चेंज हुई फ्रॉम हु शी वाज टू हु शी बिकेम एज सून एज you know she became a mother, it was like कि dude, it is a 360 degree turn. Everything is being focused to the kid. मतलब आपकी पूरी जिंदगी एक you make that choice, right? It's a choice. Now you are no more an individual, you are a parent, right? So मेरे लिए ये क्लियर था कि मिनिमम 2 से 3 साल तो मैं बच्चा नहीं कर रहा। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली व्हाटएवर यू कॉल, कि हमारे फर्स्ट 2 साल में इतनी बसड़ हो गई थी कि बच्चा तो करने का सोच ही नहीं सकते थे, टाइम ही नहीं था। अपार्ट फ्रॉम इट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट कि जब हमारी शादी हुई थी, शो दैट यू नो जब मैं ऑफिस में रहता था तो देयर वर मल्टीपल पीपल टू मी। मेरा बॉस था, ठीक है, जो मुझे बोलता था कि मत करना बच्चा। एक बॉस था
ठीक है, उस बॉस के बच्चे थे, हाँ उस बॉस के 2 बच्चे थे और दोनों के 2 बच्चे थे. सो दे यूज्ड टू डिस्कस इन डेप्थ अबाउट देयर सैलरी, अबाउट देयर फाइनेंसेस कि यार बच्चे आते हैं तो हम लोग अपने लिए कुछ नहीं कर पाते. एंड आई वाज ऑफ द ओपिनियन दैट कि दीज गाइज आर डिस्कसिंग अबाउट फाइनेंसेस एट द एज ऑफ 45, 46. They were at 45, 46 at that point of time. Yeah. And they are still struggling with the finances. So I have to also become financially independent to have. हाँ, which we were clear even before marriage कि finances होंगे तभी करेंगे. That got changed, you know, slowly and steadily. And there was one person who is, you know, there in his life, and he has arrived in his life, and he's good. He has maintained everything. उसने भी बच्चा पैदा कर दिया, विच आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये बंदा भी बच्चा पैदा कर रहा है. तो मेरे लिए आई वॉज टेकन अ स्टेप बैक कि यार सब बच्चा पैदा कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है. सो देवर डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट चॉइसेस दैट पीपल वर मेकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और मुझे कोई बोलता था कि बच्चा पैदा करना चाहिए और कोई बोलता है बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए. पर नंदलेस yes, वो दोनों बोलने वाले लोगों के पास खुद के बच्चे होते हैं. सो मतलब मैं थोड़ा सा डिलेमा बोल सकते हो या वो सब जो भी कहना है वो बोल सकते हो. एंड आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज आई रियलाइज्ड एंड एज आई टोल्ड यू इज दैट it is not about just having a baby in first year of marriage. It is also about understanding the compatibility that you share with your partner. We have seen lot of people, I've seen in my family that कि यार शादी के बाद ना आप अपने साथ एक दूसरे पे फोकस नहीं करते हो और आप थोड़े से डिविएट हो जाते हो. करेक्ट, डिविएट मतलब बच्चे के ऊपर आ जाते हो अपना फोकस लेके. एंड देन योर issues are not resolved, which was happening with us at one point of time when we got married. Our issues were not getting resolved. We were fighting, we were not talking to each other, we were absolutely not aligned to our thought process, because in first 2 years तो आप पूरे relationship को समझने की कोशिश करते हो. उस बीच में मेरे family का influence आया था कि यार बच्चे पैदा कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा. There were a lot of influence I remember show from your family also that यार बच्चे पैदा कर लो सब ठीक हो जाएगा. बच्चे तो पैदा करने, but we stood strong, we did not made a choice to have it. Then came the point of COVID. वो कोविड के टाइम पे बहुत सारी रियलाइजेशंस हुई एंड दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ फाइनल नेल इन द कॉफिन दैट कि नहीं यार बच्चे नहीं करने, बिकॉज फर्स्ट अलाइनमेंट ऑफ मियाँ बीवी इज सपोज टू हैपन. फर्स्ट अलाइनमेंट ऑफ कमिंग टू द सेम पेज नीड्स टू हैपन. इट इज नॉट दैट कि एक की चॉइस बच्चा करने की और दूसरा बच्चा नहीं करना चाहता, देन यू स्टिल वांट टू डू अ बेबी. It was a clear indication for me that I cannot bring a life in this kind of world that we are talking about, because COVID के बाद पूरी दुनिया एक बदल गई, right? It was a new way of living, it was a new way of looking at things, everything was moving so fast, and I thought that no, I don't want to have a kid. So that was your final nail in the coffin. Oh wow, you decided in 2021? Yes. That late? Yeah. इसका पहले हो गया था. हाँ, कब से हो गया था मेरा? I was ready to not have kids. So yes, that was my journey of not having a kid. चलो अब बताओ तुम्हारा क्या thought process of not having a kid. So I think I used to be this, obviously you know now, but I used to be this cheesy romantic person who used to have romantic notions about having a baby also. That how if I will मतलब मैंने फुल ऐसे सपने अपने सजाए थे कि पहली बात तो मेरी माँ ने मुझे 5 वर्षीय योजना होती है जैसी वैसी लाइफ की 5 वर्षीय योजना दे दी थी कि बेटा 24 साल की एज में शादी कर लेना, 26 साल की एज में पहला बच्चा, 28 साल की एज में दूसरा बच्चा, 30 ईयर्स तक तुम फ्री. ठीक है, स्कैम सबसे बड़ा था ये. मेरी माँ ने मुझे स्कैम करने की कोशिश की, बट फिर अनफॉर्चुनेटली मेरी माँ ही निकल ली. ठीक है, शी वाज नॉट देयर. सो आफ्टर हर लीविंग आई ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ, I don't even think after her death, I would say that after her accident itself, I was expected to fill her shoes. Like by my sister, I automatically became the major decision maker in the home because I was also providing a lot of money for her, क्या बोलते हैं, for her
medical expenses and in general home issues. जैसे for example my dad was rendered so alone after her going into a coma that my dad used to wait कि ये जब आएगी ना तब हम घर के पर्दे खरीदेंगे. Like it was something as simple as that, but it became a task assigned to me. Correct. Because before me it used to be mom's decision. So automatically like everybody started looking up to me as my mother's replacement. Correct. So somewhere I started taking on the motherly responsibilities also. Correct. For my family. So I anyway used to feel like this much older person than her age, who's doing the right thing, who's taking major decisions in life, who's doing the responsibility part of a mother already. So why would I not have kids? मतलब अगर मैं जगत माता बन के बैठी हूँ तो मैं अपने लिए भी तो करूँगी ही ना. Absolutely. अपने बच्चे के लिए भी करूँगी ही. But as and when we started to talk about marriage. Correct. And we started to talk about having kids. And then I had the first hand experience with your niece and nephew and how Didi's life had changed. Correct. Completely. I started having those realizations that this is what happens. Correct. After having a baby. You don't get time to eat, sleep, breathe. Yeah. Your kid will demand your attention every moment of time. But then also I realized that if you have a great life partner, which you were, if you have someone like as supportive and nice as my life partner was, if Karan was like that. Correct. So I was getting more and more confident कि okay, Karan and I can do this. But then came a point where there were a lot of these kind of things said to me. Correct. That you don't do it right now. I am tired of taking care of kids. You do it a little later. And there used to be this constant dilemma that you used to tell me, like my biggest fear was that if I have a baby or when I get pregnant, I will have zero support system apart from you. But you used to keep assuring me that my mother will do it for you, no? It's okay, my mother will do it for you. Correct. But my issue was that when your mother is not even able to do the basic niceness, basic being a good person to me, how will she behave when I will be in a vulnerable state? And when you're pregnant, you're in the most vulnerable state. Correct. So I just was freaking out about the fact even before thinking. मतलब हमने तो ये भी बात नहीं करी थी कि चलो कर लेते हैं. मतलब हम उस पॉइंट पे भी नहीं आए थे. Even before that I had started to panic because of the way I was treated in the household. Because I felt cornered and I felt like isolated and I felt like alienated कि तुम तो outsider हो ना, तुम तो बाहर से आई हो. तो how can I then trust myself to be so vulnerable in this house? Correct. And have a baby completely. And plus I had seen so much of those norms that your family had, right? That तुम अपने घर मतलब लड़की जब प्रेग्नेंट होती है तो अपने घर जाती है, फिर जब वहाँ से वापस आती है तो इतना सब कुछ लेके आती है और ऐसा होता है वैसा होता है. तो I was getting, after the whole episode that happened with dowry and everything, I was getting very worked up about it. And again I'm reiterating that हमारे बीच में कोई discussion ही नहीं हुआ था इस चीज को लेके. But I used to just observe because I was kind of also, like you said, I was also conditioned to think कि शादी के बाद next natural step is having a kid. Correct. तो मैं gear up कर रही थी कि यार देखो कुछ भी सही नहीं चल रहा है, हम दोनों के बीच में भी problems हो रही है, but ये आने वाला है. Correct. Sooner or later. तो सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ कि तुम्हारी मम्मी की तरफ से ये आया कि अभी रुक जाओ, अभी तो मत करना, मैं तो थक गई हूँ दूसरे बच्चों को देख के, तो थोड़े टाइम बात करना, देन ओनली आई विल बी एबल टू हेल्प यू. करेक्ट. पर मेरी तरफ से आया
माय मासी एंड नानी वर लाइक कि हम लोग जब तक हैं तब तक तुम कर लो और हम सब मैनेज कर देंगे तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो. तो इट रियली फेल्ट लाइक समवन इज गिविंग मी अ टास्क. जैसे हम डिग्री अचीव करते हैं ना कि अभी मुझे पीएचडी का सबमिशन करना है, तो ये डेडलाइन है, तब तक तुम अपना सबमिशन कर दो. करेक्ट. और जॉब. हाँ, और अ जॉब. सो आई वाज रियली फीलिंग लाइक कि, और ये ना मतलब व्हेन वी गॉट मैरिड आई वाज 28. तो बाय द टाइम आई वाज 30 वो प्रेशर ऐसा बढ़ता गया कि ऐसा होने लग गया था कि मुझे अब डर लगने लगा था सबसे फोन पे बात करने में, क्योंकि सब लोग गैंग अप हो जाते थे. मतलब मैं अपने घर वालों की बात करी. करेक्ट. दे यूज्ड टू गैंग अप एंड दे वर लाइक कि कर ले अब तो कर ले, देख करीना कपूर ने भी कर लिया. व्हाट आर यू क्रेजी? करीना कपूर की मतलब करीना कपूर के पास 25 नौकरों की लाइन लग जाएगी. वो एक उंगली उठाएगी ना तो पूरा दुनिया, पूरा हॉस्पिटल खाली हो जाएगा. उसका मन, वो वैसे बच्चा पैदा कर सकती है, उसका मन. मैं यहाँ पर 25 चीजें ऑलरेडी जगल कर रही हूँ लाइफ में, एंड उन सब के बीच में मैं ये कर लूँ बच्चा पैदा, क्योंकि करीना कपूर ने कर लिया. I think this was the most funniest thing that happened. But yes, I remember that conversation that day. I felt extremely anxious, cornered, and I was very, very overwhelmed after that conversation. And plus the fact that you and I were not in a great place in our relationship. Our physical relationship was also affected. So I used to really feel like कि इतने सारे रायते में अगर बच्चा हो गया तो मतलब मैं तो पगला जाऊंगी. I will lose my mind. And my sanity with the kid. So ऐसा तो नहीं हो सकता कि if I have lost my mind and I will be a great mother to the kid. So I think by the time you and I found that time to have a final conversation about it, I had already kind of made up my mind that ये मुझसे नहीं हो पाएगा. True. क्योंकि I felt like the financial factors is against me, the emotional factor is against me, the family factor, the space factor is against me. We were living in like one room kitchen, 1 BHK type spaces where you and I were in each other's face. अभी वहाँ पे बच्चा भी आ जाए तो it was just like everything was piling on to me. There were also my friends who were trying to tell me that तुम लोग जो इतना सब प्रॉब्लम में हो ना, and whatever Karan has gone through with his family, he needs to have his own family. That I remember. So when Karan will have a kid is when he will heal. Correct. And when your relationship will finally come to a good place. And I was like, what? No. I found that very funny. Yeah. I was like कि ये कोई है ना, ये टीवी सीरियल की बातें हैं, प्लीज ये मुझे मत बताओ. ये मैं डायलॉग लिख चुकी हूँ, ठीक है, तो ये डायलॉग मेरी लाइफ पे अप्लाई नहीं होगा. आई एम सॉरी. तो आई वॉज रियली फीलिंग लाइक कि everybody has an opinion about how and when I should have a kid. Correct. Except for me. Yeah. So slowly I started forming my opinion, and I had actually come to even in 2019-20. Yeah. By the time my sister got married, I had made up my mind. Yeah. That this is done. This is final. मैं इससे ज़्यादा किसी like I was such a big giver to my family and to you and Correct. to your family also to certain extent that I had reached that conclusion that अब मेरे अंदर और देने के लिए कुछ है ही नहीं. Correct. मेरा हो गया. मैं खाली हो गई हूँ. If I am an empty cup and I have a baby, what will I pour in? Yeah, true. So yeah, with that thought, I think one of my decisions also started evolving with time. Though there is, जैसे अभी तुम बता रही हो कि हमारे दोनों के डिसीजन में जद्दोजहद तो सेम थी, बट आई थिंक तुमने 2020 में एक डिसीजन ले लिया था. मेरा 1 साल के बाद हुआ था. यू आर ऑब्वियसली चैलेंजिंग द होल डायनामिक्स, बट मैं चैलेंज नहीं कर रहा था. मैं वो समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं ऐसा क्यों करूँ. अगर मैं बच्चा करूं तो मेरे रीजंस क्या है, मल्टीपल रीजंस. Those were the different thought processes of a male and female, like what we discussed right now. I also remember that you used to at some point of time ask me that तू तो भूल जाएगी ना मेरे को बच्चा होगा तो. And I used to be like panicked at that thought because हाँ मतलब मुझे नहीं चाहिए था ऐसा कि ऐसा हो कि बच्चा आ जाए और मैं तुम्हें भूल जाऊं. नहीं, you were my first priority always. You were my best friend. But
मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसका जवाब कैसे दूं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बच्चा है और मैं फिजिकली आई एम कैरिंग द चाइल्ड, राइट, फिजिकली आई विल बी गोइंग थ्रू एवरीथिंग, या सो मुझे नहीं पता कि मैं फिजिकली मेंटली किस हालत में होंगी कि मैं तुमको कैसे प्रायोरिटी दे पाऊंगी, बट आई वाज नॉट रेडी टू से दैट, मतलब आई वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. तो आई यूज्ड टू बी लाइक पैनिकिंग इन माय माइंड, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता था करेक्ट इस चीज का. और उस बात से मेरे को बहुत तकलीफ होती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि करण मुझे बोल रहा है और मैं उसको जवाब नहीं दे पा रही हूँ. एंड देन एट द सेम टाइम मुझे खुद को भी ये फील होता था कि करण अगर बच्चे की बात कर ही रहा है, मतलब अगर मैं बच्चा नहीं पैदा करूंगी तो आई एम नॉट इनफ. करेक्ट, ट्रू. करण वांट्स मोर. Yeah. So I think that's what I was trying to say, that कि जो आप अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, राइट, यू कैन राइट नाउ सी दैट कि दो you know there are two differences here. The challenges are the same in such a way that ki Shokhi was also thinking about the same thing and I was also thinking about the same things, right, you know, financially, emotionally, physically, lot of challenges. But I think one of the most important factor that, you know, evolved with us over time was, Shokhi, that we started understanding that ki first and the foremost thing is that कि अगर हम किसी को लेके आना चाहते हैं इस लाइफ में तो हम पहले अपने आप को ठीक कर दें. Lot of times we don't even think that जो मेरी हालत है, मैं किस प्रॉब्लम से गूंज रहा हूँ, मेरे इश्यूज क्या हैं, एम आई एबल टू कम्युनिकेट इन द रिलेशनशिप, एम आई एबल टू डू जस्टिस इन द रिलेशनशिप, एम आई एबल टू इवन बी फिजिकली अवेलेबल फॉर माई पार्टनर, एम आई एबल टू communicate right to with my partner, am I able to you know, give all the needs that are, you know, available to my partner. तो most of the time हमारी सोसाइटी इस तरीके से बनी गई है कि वो बोलते हैं कि यार शादी करने के बाद आप बच्चा पैदा कर लो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक कर लोगे, राइट, यू नो, दैट इज अ थॉट प्रोसेस, सेटल हो जाओगे लाइफ में. बट आई थिंक यहाँ पे एक बहुत बड़ी गैप है कि पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट the gap cannot be fixed until and unless you are fixing yourself first. So there was a time in the society when they did not have anything to do. They were just selling that कि यार आप बच्चे पैदा कर लो, you know, everything will be fine, because they did not have... It was not even about selling, it was about the fact that procreation was the need of an hour. Yeah. Like आपके पास गरीबी होती थी तो एक बच्चे से काम नहीं चलेगा, तो 2 बच्चे कर लो, तो 3 बच्चे कर लो, तो 4 बच्चे कर लो. मतलब it was a recreational activity. Yeah, but then you know that was the time, and I think as humans we are evolving, and जो कोविड में अभी हमारे साथ हुआ, जो कोविड में हमने देखा, the kind of, you know, deaths we saw, the kind of emotional traumas that people were going through. I think उससे एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हम दोनों को हुई कि if we want to bring a human life, then we would want to take 100% responsibility of that human life, and which we were not ready for. So that was the, you know, final nail in the coffin for both of us, that we decided no, you know, we don't want a kid. And now today in our life we are at a point where we have started to see the benefits of not having kid. There are a lot of benefits of not having kids. I'm sure there are benefits of having a kid also. I'm not, you know, denying but we are not in the state to comment on that because we have not had first hand experience. So but definitely there is a point where we have realized that the amount of money that we are making will never be enough if we have another person to take care of. And if there is a kid involved, there is a priority. He or she will be the priority for all finances. Right from their food to taking care of their needs, their clothes, their education, and like it's insane. The friends who are parents, our friends who are parents, they are lining up when the baby is 1.5 years old. They are lining up in front of schools to pay the fees in advance. Like the education system has completely taken a shift. And there's a huge financial gap to fill. Apart from it, so one of the things which I see is the kind of competition that kids are facing today. There is no
there is education, the education is evolved, but the kind of pressure we as kids used to have was limited pressure, right? आज की तारीख में आप देख रहे हो, like I have heard stories on Delhi, right, कि आपको आपके बच्चे के पास आपका फादर क्या करता है, कौन सी गाड़ी में आता है, कौन सी गाड़ी में जाता है, कैसे करता है, all of those patterns are very very challenging for us to live in the world that we are living in. It's a competitive world, and the kids are facing that competition. They are a part of that competition, which I think is not what we would want to be. We don't want to be a part of that competition. So there will be lot of different opinions about it, that कि लोग क्या कहेंगे, एक तरफ से आप ये बोल रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, एक तरफ से आप बोल रहे हो कि आपको उससे फर्क पड़ता है. It is not about that. It is about when you are having a baby, right? It's about कि वो बेबी के ऊपर सोसाइटी क्या इम्पैक्ट डालेगी, वो बेबी के ऊपर क्या देखने से वो किस तरीके का इंसान बनेगा, क्या तरीके से वो इवॉल्व होगा और अपने चैलेंजेस किस हिसाब से फेस करेगा. यू कैन ऑल्सो सी द काइंड ऑफ स्क्रीन टाइम दैट वी आर फेसिंग टुडे. किड्स आर फेसिंग इश्यूज दैट कि उनको मोबाइल नहीं दोगे तो वो चिल्लाना चालू कर देते हैं, रैंट करना चालू कर देते हैं. सो देयर आर मल्टीपल रीजंस टू इट. इट्स नॉट लाइक कि हमने एक ही डिसीजन लेके बोल दिया कि नहीं हमको बच्चा नहीं पैदा करना है. वी हैव come to the decision after understanding there can be multiple things which we feel that कि यार नहीं हम अब इस समय में बच्चे को नहीं लेके आ सकते. So do you also researched on few of the things, right? There are a lot of demographic researches and all happening all across the world, where it is said, I think it happened in 2021, according to Pew Research Center, 44% of non-parents aged 18 to 49 said it is unlikely or not too likely that they will have children someday. That's a notable increase of 37% from 2018. And in India there are a lot of people who are getting more and more aware of this thing called child free. Yes. And there are actually groups on Reddit which is called Child Free India, where people are proudly child free. And they're seeking each other out, like singles who don't want kids are on that group, and they're looking for other singles who don't want kids, and actively they're making a choice of not having kids. So like right now, if Karan and I talk about it, at least 80% of our friend circle has made that choice of not having kids. And the remaining 20% is slowly seeking out other people who do have kids, because it doesn't make sense after a certain point of time, because we don't know what to talk about. True, right? True. So they automatically gravitate towards people who can share their problems with the kids, and who can share their grief or happiness of having a kid or not having a kid. Apart from it, so I also remember that ki people are also getting much and much more aware of their physical or psychological well-being. Correct. जो हम बात करते हैं हमारे episodes में, correct, people are getting more aware of their mental health. People are also getting aware that ki what kind of decisions that you need to make when you have a kid. Financial, physical, mental, all these things are very much interconnected when we take these decisions. So like imagine if me and Karan were having so many issues in our relationship, and then Karan was diagnosed with depression or dysthymia, which is a longer form of depression, in 2020 after the lockdown, during the lockdown. And imagine if he was a father at that point of time, the kind of tremendous pressure that he would have put on himself, that oh my god, no, I cannot have mental health issues or whatever, because I need to take care of my family, my kid. I need to be okay. And probably he would have not shown again, like he would have not shared it out loud, and he would have just suffered alone because he didn't want the kid to get affected. True. So there are the mental health challenges, mental health issues are real for people. There is a recent case that happened where
a young mother committed suicide. True. Because of postpartum depression. Yeah. Because people had publicly shamed her for not taking care of a baby properly. True. So postpartum depression is also real. So yeah. when as a mother you are more susceptible to such a problem after pregnancy automatically. Correct. Then what will you, like, how will you manage if your life partner is also going through mental health challenges? Imagine what will happen to the kid. वो तो बच्चा अकेला ही रह गया ना, मतलब उसको तो कोई देखने के लिए है ही नहीं. Like either he will be facing the brunt of both of our mental health issues, or the kid will basically be taken care of by someone else. Correct. True. In which case there can be a nanny or some other family member. Correct. So I mean, yes, that's more or less about what were the decisions that made us take the decision of not having a kid. Yeah, and I think also now social media is playing a very big role. Yeah. In terms of expression. Yeah. People are expressing their need of not having a baby. Like I would say that ki not having a need of baby se zyada, I think it's showcasing the self love expression. Like you are loving yourself first, and then you're prioritizing yourself than following the societal norm of getting married, having a baby. In which case we should also discuss the recent terms that we found out for ourselves. There is dink and sink, and dinkwad. So dink is double income, no kids. Yes. And sink is single income, no kids. And then dinkwads is double income, no kids with a dog. With a pet, you can say. No, dinkwad is a proper I know term. With a dog. Yeah. So there are now choices that people are making it different. People are not moving with society. So that's our choice. So Shokhi, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, one and only one शिक्षा, it is your choice. Do not come under societal pressure to have a kid. Let your parents say, let your parent-in-law say, whatever, whenever they want to say. You should only have a baby when you two, as in you and your partner, are on the same page about it. Correct. And both of you are ready to take equal responsibility as a parent. Correct. If that is not the case, then please wait. Yeah. I think waiting was the best thing that Karan and I did, so that we both could come to the same page of not having a baby. Yes. And even if we were to have a baby, we would have waited. Yes. And come to a place, because this, I'm so blessed, Karan, to have you, because Karan told me this from day one, that we will not do it until and unless you are ready. Yeah. Because if the mother is not ready mentally, physically, the kid will have issues, and then eventually the whole family will have issues. Correct. So because it is the mother who goes through the most. It's the origin. I personally believe that mothers are the origin of the baby, right? तो अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हो and the mother is not happy and she is not accepting, her body is not accepting, her soul is not accepting, her mind is not accepting, and yet she is forced to have a baby, how can you even imagine the baby will be happy? That is a very clear, simple thought that I always live with. Yeah. And because baby is also coming out of her. Yeah, it's a part of her. Yeah, so that's what I'm trying to physically, say, right? That's how, the whole journey, or you can say this magical world we live in, and we all know that females are much more emotionally evolved than males. अगर मैं अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखूंगा and उसको वो emotional stability नहीं दूंगा, तो then the whole thing is going to go for a toss. So that is very simple. One more thing which I have learned is that as you have been born, you are born first as a son, then as a brother, then when you get married, you become a husband, correct? And then you become a father. Until and unless you have evolved on all of those duties by being a good son, by being a good brother, and by being a good husband, then only take a decision of being a father.
Yeah. Until and unless you have done that, I think please do not go into the societal pressure, family pressure, friends pressure. You will be in a tremendous loophole that you will ever come out of. So ये सारी clarity के साथ अगर as a male you are planning, I think you are good to go to have a baby. It's your choice. Yeah, but also one thing that you missed out is if you're not ready to be a hands-on father, do not have a baby. Yes, that's something, right? Because the mother is doing. Mothers are usually behaving as if they are the only parent. Yeah. They are juggling so many things at one time. Yeah. Their life, they have to leave their jobs. They have to go through tremendous bodily changes. Yeah. They have to literally breastfeed the kid. Yeah. They have to make the kid inside them, and then they have to make food for the kid for the rest of his life. Yeah. So if you are not ready to be a father, if you still want to be that person who goes to office, comes home, provides the money for the kid, don't have a kid. Yeah, that's not the only responsibility of father anymore. In today's day and age, a father needs to be a hands-on father, emotionally present, physically present for the kid, to have two well-functioning adult as parents. And one more thing which I would like to give it a point is, जब हम बात कर रहे हैं कि आप दोनों को एक सेम पेज पे आना है, it means that you will also take equal responsibility of being a father. You both guys need to study what it takes to bring a baby into the world. It is not a individual woman choice only. आपको साथ में बैठ के वीडियोस देखने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, डॉक्टर से बात करनी पड़ती है, मेडिसिन क्या जाएगी, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट मंथ में क्या होगा, और बिफोर इवन हैविंग अ बेबी व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक, बिकॉज़ देयर आर लाइफस्टाइल चेंजेस यू नीड टू मेक. आपको अपना दारू बंद करना है, सिगरेट बंद करनी है, बहुत सारे नशे बंद करने हैं, आपको अपनी हेल्थ और डाइट और जो भी आपका एक ओवरऑल सिस्टम होता है उसको ठीक करना पड़ता है. इट इज़ अ प्लानिंग दैट वी हैव टू डू इन द करंट लाइफ दैट वी आर लिविंग इन. सो अगर आप कर रहे हो, प्लीज टेक नोट्स ऑफ दीज थिंग्स एंड देन ओनली प्लान फॉर अ बेबी. सो यस गाइज, हमने बहुत सारी शिक्षा दी है. ये एपिसोड बहुत ही अलग सा था मेरे लिए, बिकॉज तुमने कभी सोचा नहीं था कि इस बारे में ज्ञान देना पड़ेगा. ये सही बोला तुमने. मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि यार so cute you are, मैं मतलब इस बारे में ज्ञान दूं बच्चों को, तो फिर मतलब खैर anyway. पर रियल लाइफ में तो दिया ना तुमने ज्ञान. हाँ, रियल लाइफ में तो ज्ञान दिया, सारे लोगों को ज्ञान दिया है ना. yes. तो फिर ऐसे ऑनलाइन भी दे दो. दे रहे ना अब, ये ठीक है. क्या प्रॉब्लम है? So yes guys, thank you so much guys for always being there, giving so much of your time, and you can follow us on YouTube now, and Instagram, and of course this podcast available is on all podcast platforms. So please don't forget to like, share and subscribe. We are under the name @happily_whatever_after on all social media platforms. And we will see you next week. See you guys. Thank you so much. Please do like, share and subscribe. Thank you. Thank you. Bye.